Okay guys, now let's begin with the very first chapter, and that is called as Principles of Management. Before we start with what is Principles of Management, let's try to understand what is management, but in short. What is management? Management is an art of getting the things done through other people. This definition was given by Mary Parker Follett. मतलब अपना काम हम लोग दूसरों से करवाना चाहिए. When you are a very important person, you cannot do all the things on your own. So your work, you should get it done from your employees. Then the next definition is given by Henry Fayal. Henry Fayal says, to manage is to forecast, is to plan, is to organize, to command, to coordinate, and to control. That means he is including all the different functions of management. Guys, after seeing what is management, let's try to understand what is principles of management. तो सबसे पहला तो ये देखते हैं कि what are principles. ये principles होता क्या है? Principles basically are those things that we want to follow in our life. Remember, principles are not objectives, but principles are those things जो अपने साथ जिंदगी भर रहेगा. Say for example, I will not waste my time and others' time. Could be a principle. I will be honest and loyal to everyone. That is a principle. Now, when such type of principles are embedded together for running a business organization, then it could be called as principles of management. So let's try to throw some more light on this term principle. So principle is defined as a fundamental truth or proposition. तो principle क्या है? एक basic सच्चाई है. It's a proposition. It could be called as a suggestion or an idea. It's an idea, it's a suggestion that serves as the foundation for a system of belief. हम एक पर्टिकुलर चीज के बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं, उसके पीछे जो रीजन है, वो रीजन को हम बोलेंगे प्रिंसिपल. देन इट सेज और बिहेवियर. हमने जो बिहेव किया उसके पीछे क्या रीजन था, ये सोच को हम बोलेंगे प्रिंसिपल. Or a chain of reasoning. Whatever we are thinking about a specific topic, about a specific term, about a specific situation, why we are thinking in that particular direction, those things are based on principles. So that was the principles definition. Now, what are management principles? Management principles are formed to guide and influence the behavior of employees. Now, we all know in an organization, there are different levels of management. There is management and there are employees. And we all know that managers are supposed to guide and influence their employees. So it is the management principles that guides the managers about how to direct the employees. Using different management principles, the managers will get the work done from the employees. So that was the meaning of the term principles of management. Now, let's try to understand the nature of principles of management. The first point is universal application. Now, the principles of management are applied to all types of organization. मतलब तुम्हारा organization कैसा भी हो, principles of management तो apply होगा ही होगा. That means if your organization is a big sized, or it is mid sized, or it is small sized. Now, the nature of organization could be a sole trading concern, it could be a partnership firm, it could be a cooperative society, it could be a joint stock company. Then it could be a government organization, it could be a non-government organization, it could be a trust. तो कोई भी टाइप का आपका organization होने दो, principles of management apply होते ही है. That means the principles of management has got a universal application. Moving to the next one is called as general guidelines.
Now, these principles of management are general guidelines which the managers accept. They are not hard and fast कि principle of management ने अगर एक specific चीज एक specific तरीके से करने बोला है तो वैसा ही करना है. No, they are just for giving you guidelines. वो आपका experience को help करेगा, वो आपके decision making को help करेगा. So, general guidelines are nothing but the management principles that are to be applied, and it depends completely upon the situation. They should not be rigid. Rather, वो rigid होते ही नहीं है. अपने को जैसे सूट करता है उस तरीके से management principle को तोड़ मरोड़ सकते हैं. Then, the third point says, the principles are formed by practice and experiments. Now, whatever principles are being formed, they are formed by experience of different people. लोगों ने अपने अपने फील्ड में रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंट्स किए, फिर उनको कुछ चीज पता चला. All this data was compiled together to form the principles. So we say that principles are developed through proper research. Then the fourth point says flexibility. Now, flexibility point is just the extension of the second point. That means the principles of management can change. We can adopt to different principles of management depending upon the situation that we are facing. आपके कॉर्पोरेट में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जैसा प्रॉब्लम है, जैसा सिचुएशन है, वो सिचुएशन को सूट करे वैसा आपको डिसीजन लेना चाहिए. So it is not necessary that principles of management should be followed very, very strictly. You could change according to the changing situation. Okay guys, moving to the fifth point is nothing but behavioral in nature. That means management aims at achieving certain goals through a group of human beings. अब human being का एक खास specific nature होता है. हर human being अलग, हर एक का सोच अलग, हर एक का action, reaction करने का तरीका अलग. So, principles of management deals with the human behavior. लोगों के behavior को अपने को handle करना है. And that's why we say that principles of management deals with the behavior of human beings. Guys, moving to the sixth point, and that is cause and effect relationship. Now this is basically a principle of science. मतलब जब कोई इफेक्ट दिखता है तो कोई ना कोई तो कॉज होगा, और जब कोई स्पेसिफिक कॉज होता है उसका वैसा इफेक्ट दिखाई देता है. So the principles are based on cause and effect relationship. These principles are the basis of taking a particular decision. मतलब अगर हमको कुछ specific objective को fulfill करना है तो वो हिसाब से हमको कुछ specific decisions लेने पड़ेंगे. For example, अगर हमको a group of employees से अच्छा output चाहिए, वो output जल्दी चाहिए, तो उनको good working conditions, proper remuneration, that is wages and salaries, हमको देना चाहिए. And lastly, all principles of management are of equal importance. Now guys, Henry Fayal ने 14 principles दिया है. तो उसमें का फर्स्ट प्रिंसिपल सबसे इंपॉर्टेंट है और 14 प्रिंसिपल सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं होता. All the 14 principles are of equal importance. बस अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं. So we say all management principles are to be practiced simultaneously to get the best results. So guys, these were the 7 points under the nature of principles of management. So students, now let's begin with Henry Fayal's 14 different principles of management. Now, before we actually start with the 14 principles of management, let's learn some things about Mr. Henry Fayal. Now, Henry Fayal was a mining engineer. वो एक engineer था और फ्रांस के एक mining company में वो काम करता. And because of his talent and because of his research, he rose to a position of the chief managing director. Now in his lifetime, he wrote a book, and that book was called as General and Industrial Administration.
And in this particular book, he gave the 14 different principles of management. And these management principles became very, very famous. And that's why Henry Fayal is also known as the father of modern management. So guys, let's begin that what are the 14 different principles of management. These 14 different principles of management starts with the division of work and it goes right towards the end and ends with team spirit or esprit de corps. So what we will do is we will learn all these 14 principles step by step and starting with the very first one. So, the first principle is called as the principle of division of work, also called as specialization. Here it says that all the employees should be divided into different departments and they should be given that work in which they have expertise. जो भी एम्प्लॉइज हमारे यहाँ पे है उनको डिपार्टमेंट वाइज सेग्रीगेट कर देना चाहिए, उनको जितना ट्रेनिंग का जरूरत है वो दे देना चाहिए. And the employees should be allowed to do the same work again and again. I mean to say the same nature of work again and again. So when employees do the same type of work again and again, they become experts of that particular job. So, the principle of division of work and specialization says that the work is to be divided into different kinds such as technical, financial, commercial, security operations. That means we divide them according to their departments or according to their qualities and qualification. So the moral of the story of point number 1 is when you allot one particular type of work to one particular person, allow him to do the same nature of work for a longer period of time. And when he does the same thing for a longer period of time, he becomes an expert of that particular job. And that's how we can get the same job from him done with lesser time and with lesser inputs. Okay, let's move on to the second point that is called as the principle of authority and responsibility. So basically, authority means the power to do a particular job और responsibility का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी. So guys, if you are given some particular responsibility, you should be given some authority. बिना power के, बिना authority के कोई भी responsibility complete नहीं किया जा सकता. और अगर आपके पास सिर्फ अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, then that authority will go waste, or I can say that the authority can be misused. So Henry Fayol says that there should be a perfect balance between authority and responsibility. That is, the authority and responsibility both should go hand in hand. ज़्यादा authority कम responsibility नहीं चलेगा. कम authority ज़्यादा responsibility ये भी नहीं चलेगा. जितना responsibility उसको complete करने के लिए उतना authority मिलना ही चाहिए. That means there should be a balance between authority and responsibility. Okay, moving to the next point is called as the principle of discipline. Now, discipline is a part and parcel of our life. We all need to be disciplined. अपने हर एक के माँ बाप बच्चे लोग को डिसिप्लिन रखने का कोशिश करते हैं. So basically ये डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? If we talk discipline from the corporate point of view, it is basically following the rules and regulations. Now, every organization should have a specific set of rules and regulations. And these rules and regulations should be strictly followed by all the employees. लेकिन बच्चा लोग आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप चाहते हो कि ये employees आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे तो आपको पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा. दैट मींस द हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट शुड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड देन ऑटोमेटिकली द लोअर लेवल एंड द वर्कर्स विल फॉलो द हायर लेवल एंड दे विल आल्सो फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन. सो दिस इज रेफर्ड टू एज डिसिप्लिन्ड. एंड नाउ वी ऑल नो अपना आर्मी कितना डिसिप्लिन्ड है, इसलिए उनका आउटपुट भी कितना बेस्ट होता है और कम
सबसे कम टाइम में होता है। जब कहीं पे भी इमरजेंसी होता है तो आर्मी को बुलाया जाता है। क्यों? बिकॉज दे आर डिसिप्लिन्ड। So in the same way, when you want to get the best output from your employees, you should keep your employees disciplined. And that's the principle of discipline. Moving to the fourth principle of management, that is called as the principle of unity of command. Now, unity of command says that every employee in an organization should have only one boss. मतलब हर वर्कर का, हर एम्प्लॉय का सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए। हाँ, एक बॉस के मल्टीपल सबऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, दैट इज क्वाइट ओके, लेकिन एक सबऑर्डिनेट का एक ही सुपीरियर होगा। क्योंकि अगर मल्टीपल सुपीरियर्स हो गए और अगर ये मल्टीपल सुपीरियर्स ने ये एक सबऑर्डिनेट को एक ही टाइम पे अलग अलग टाइप का काम दिया, तो बेचारा ये सबऑर्डिनेट करेगा क्या? इसके सुने कि इसके सुने? There will be a confusion and he won't be able to complete his work. So care should be taken while deciding the hierarchy of management or the hierarchy structure, that every employee should have only and only one superior. So according to this principle, each member of the organization should receive orders from one and only one superior. Okay guys, let's move on to the next principle, and this is called as the principle of unity of direction. Now, unity of direction का मतलब होता है कि when you are leading a group of employees, तो वहां पे एक ही प्लान होना चाहिए सबके सामने, और ये एक प्लान को लीड करने वाला एक ही बंदा होना चाहिए। अगर मल्टीपल लोग गाइड करेंगे पूरे ग्रुप को, so the entire group will go nowhere. So you should make it sure that one department has got one developed plan, and that one plan is headed by one particular person. So according to this principle, there should be one head and one plan in an organization. अब it is not necessary कि पूरे organization के लिए एक प्लान हो, आप डिपार्टमेंट वाइज भी प्लान बना सकते हो। रिमेंबर, हमने पढ़ा था कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल, दे आर नॉट रिजिड। सो आप डिपार्टमेंटल प्लान बनाओ, आप टाइम के हिसाब से प्लान बनाओ, चलेगा, लेकिन एक प्लान को सब लोग फॉलो करेंगे, एक ही प्लान बनेगा और वो प्लान को लीड करेगा एक बंदा। Okay guys, so now let's move on to the next set of principles. The sixth principle is called as the principle of subordination of individual interest to organizational interest. Now, everyone knows that every organization has got certain goals. ठीक उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं उनके भी तो कुछ अपने पर्सनल गोल्स हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम वर्किंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, दैट ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू मेक प्रॉफिट, फाइन, दे वांट्स टू अर्न गुडविल, दैट इज आल्सो फाइन। अच्छा, एज ए एम्प्लॉय मेरे भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, मुझे अच्छा सैलरी मिलना चाहिए, मुझे वर्किंग कंडीशंस अच्छा मिलना चाहिए, मुझे आराम वाला काम चाहिए, ये सब ओके। लेकिन जब कब ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और पर्सनल गोल्स अगर क्लैश होते हो, तो पर्सनल गोल्स को साइड में रखना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए यू शुड स्ट्राइव हार्ड। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, the personal goals should always subordinate. That means the individual goals or individual interests should always support the organizational interest. पर्सनल गोल्स या इंडिविजुअल इंटरेस्ट कभी भी ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट अगर फुलफिल होता है तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट फुलफिल होने ही वाला है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट अगर फुलफिल होगा तो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट भी फुलफिल होगा। So, my dear students, remember that organizational goals or interests are always at higher priority, and the individual goals or interests always are at lower priority. Maximum time ये कोशिश करो कि individual interest should support the organizational interest, और अगर clashes होते हैं तो पर्सनल इंटरेस्ट इंडिविजुअल इंटरेस्ट को साइड में रखना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के पीछे आपको पढ़ना चाहिए, उनको अचीव करने के लिए आपको कोशिश करना चाहिए।
Okay, now let's move on to the seventh principle, and that is called as the principle of centralization. हेनरी फयोल बोलते हैं कि सेंट्रलाइजेशन मतलब एंटायर अथॉरिटी इज कॉन्सेंट्रेटेड विथ वन पर्सन और विथ फ्यू पर्सन. डिसेंट्रलाइजेशन इसका परफेक्ट उल्टा. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सब लोगों में अथॉरिटी को डिवाइड किया जाएगा. Now Henry Fayol says complete centralization is also not good and complete decentralization is also not good. It completely depends upon the type of organization and the size of organization you are working in. अगर एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है तो एक बंदा पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से कंट्रोल में रख सकता है, तो वहां पे आपको सेंट्रलाइजेशन फॉलो करना चाहिए. And when you have a very big organization, one person cannot control the entire organization. So here, if you follow centralization, then there will be a delay in action. So my dear students, in big organizations, you should be following the principle of decentralization. So principle of centralization and decentralization says apply centralization and decentralization depending upon the situation, depending upon the type of organization and the organization. Okay, moving to the next principle is called as the principle of remuneration. Now remuneration का मतलब होता है the returns the employees get when they work. Now these returns could be in the format of salary or it could be in the format of wages. तो principle of remuneration ये बोलता है कि जो भी employees हमारे organization में काम करते हैं उनको handsome salary मिलना चाहिए. Handsome salary का मतलब होता है जितना वो काम करे उतना उनको अच्छा सैलरी मिलना चाहिए. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑल दी सैलरीज दैट आर बीइंग पेड शुड बी पेड ऑन टाइम. So, the principle of remuneration says that according to this principle, remuneration should be fixed by taking into consideration the skill, expertise, knowledge, tenure, cost of living, the market trend, profitability of the organization. मतलब वो बंदा कितना पावरफुल है, उसका कितना नॉलेज है, उसके पास क्या क्वालिफिकेशंस है, उसका क्या स्किल है, ये हिसाब से आपको उसका सैलरी तय करना चाहिए. अब अगर वो मुंबई जैसे शहर में रहता है तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा सैलरी ज्यादा देना चाहिए क्योंकि यहाँ पे महंगाई ज्यादा है. अगर वो 2 टायर या 3rd टायर सिटी में रहता है तो सैलरी कम दिया तो भी चलता है. So that was called as the principle of remuneration. Okay guys, let's move on to the next principle, and this is called as the principle of scalar chain. The principle of scalar chain depends upon the authority and responsibility. Guys, we all know that authority moves from top to bottom. मतलब बॉस हमेशा अपने सबऑर्डिनेट्स को अथॉरिटी देता है कोई एक स्पेसिफिक काम करने के लिए. And the responsibility flows from bottom to top. दैट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है वो हमेशा ऊपर वाले लेवल ऑफ मैनेजमेंट का होता है या बॉस का होता है. इन शॉर्ट, अगर आपको कोई काम करना है तो आपको उसका परमिशन आपके ऊपर वाले लेवल से लेना चाहिए, और जब परमिशन देना होता है तो हायर लेवल ऑलवेज गिव परमिशंस और अथॉरिटी टू द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. सो व्हेनेवर अ पर्टिकुलर टास्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन, then an employee should take permission or consult his immediate senior. Then that senior will consult his senior, and in this way the responsibility goes up. और जब permission मिलता है तो ये permission ऊपर से नीचे आता है. That is called as the principle of scalar chain. But my dear students, at the time of emergency, अपने पास formality के लिए time नहीं होता. अपने सीनियर का परमिशन लो, वो अपने सीनियर का परमिशन लेगा, फिर अप्रूवल आएगा, इसमें टाइम चला जाएगा, इसमें सिचुएशन और खराब हो सकता है. सो हेनरी फयोल सेज दैट अ गैंग प्लैंक शुड बी क्रिएटेड.
I repeat, a gangplank should be created. That means a bridge should be created. मतलब तुम पहले प्रॉब्लम सॉल्व करने को प्रायोरिटी दो. मतलब अगर हमारा प्रॉब्लम किसी दूसरे डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय सॉल्व करने वाला है तो वो लेवल का एम्प्लॉय के साथ आप डायरेक्ट बात करो और प्रॉब्लम उसको बताओ. और एक साइड में आपका ये परमिशन का जो प्रोसेस है वो चलने दो. इससे ये होगा कि एक साइड में आपको परमिशन भी मिल जाएगा और एक साइड पे आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन. So scalar chain means the hierarchy of authority, that is from top level to the lower level of management for communication. और मैंने अभी भी आपको बोला था कि इमरजेंसी सिचुएशन में आपको ये प्रोसेस फॉलो करने का जरूरत नहीं है. एक ब्रिज बना के आप आपका काम जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकता है. Okay, now let's move on to the 10th point, and that is called as the principle of order. Now, principle of order is a very simple thing to be understood. और आप इसको आपके पर्सनल लाइफ में भी इंप्लीमेंट कर सकता है. Principle of order says there should be a place for everything and everything should be in its place. इसका मतलब है आपके जो भी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स है उसको रखने के लिए एक स्पेसिफिक जगह होना चाहिए और वो जगह पे आपके ये सब टूल्स एंड इक्विपमेंट्स होने चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे लोग, आपके लाइफ का अगर मैं बात करूं, आपके बुक्स रखने के लिए, आपका यूनिफॉर्म रखने के लिए, आपका पेन, पेंसिल, इरेजर, कैलकुलेटर, जो भी रखने के लिए एक प्रॉपर जगह होना चाहिए. और वो जगह पे ही आपके ये सब बुक्स, ये पेपर्स, आपके सब टूल्स एंड इक्विपमेंट्स होने चाहिए. इससे क्या होगा, जो भी टूल एंड इक्विपमेंट या जो भी बुक आपको चाहिए वो आपको फटाफट इमीडिएटली मिलेगा, आपका टाइम बचेगा. In the same way, in an organization, all the tools and equipment should have a specific place of storage. That means जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है और हमको कुछ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स का जरूरत पड़ता है तो ये टूल्स एंड इक्विपमेंट्स को ढूंढने में हमारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए. जैसे एक मशीनरी बंद पड़ गया और एक मशीनरी का पार्ट खराब हो गया, वो पार्ट अपने पास स्टोरेज में है लेकिन वो किधर है वो नहीं पता हमको, और वो ढूंढने में अगर टाइम गया तो हमारा सब वर्कर्स बैठा रहेगा. ऑब्वियसली वो काम नहीं कर सकते क्योंकि मशीन काम नहीं कर रहा है. इसी को हम लोग बोलते हैं लीड टाइम, द टाइम दैट इज वेस्टेड बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ मशीनरी. सो इफ यू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर तो हमारा इंजीनियर को पता है कि ये मशीन का पार्ट कहां पे है, फटाफट वो मशीन का पार्ट वहां से ला सकता है, फिट कर सकता है और कम से कम टाइम वेस्टेज में आपका प्रोडक्शन फिर से चालू हो जाएगा. That is called as the principle of order. So I said this principle focuses on the proper utilization of the physical and human resources. Okay, let's move on to the next one, and that is called as the principle of equity. अब इक्विटी का मतलब होता है फेयर ट्रीटमेंट टू ऑल. एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वल. मेरे पहचान वाले को मैं प्रमोशन देता है और जो मेरा पहचान वाला नहीं है उसको मैं प्रमोशन नहीं देता. ये सब पॉलिटिक्स करने का नहीं. You should be fair and equal to all. You should judge all with the same level of judgment. That means the management should be fair as well as friendly to all the subordinates. कोई टाइप का डिस्क्रिमिनेशन आप एम्प्लॉइज के बीच में नहीं करेगा. लेडी एम्प्लॉय को आप खास प्रेफरेंस देगा, जेंट्स को आप प्रेफरेंस नहीं देगा. नो, सच टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन शुड नॉट बी डन. अच्छा, एक पर्टिकुलर मेल एम्प्लॉई है तो उसको हम बड़ा काम देते हैं और फीमेल्स को हम लोग बोलते हैं नहीं नहीं आप ये काम नहीं कर सकते. सच थिंग्स शुड बी अवॉइडेड. सो आई सेड देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन एम्प्लॉयज. सो दीज वेर द 11 principles. Okay guys, now moving to the next thing, that is the 12th principle called as the principle of stability of tenure. Now, the principle of stability of tenure says that whenever people are appointed in your organization, मतलब जब आप employees को appoint करते हो तो उनको job security दो.
मैं ऐसा नहीं बोलता कि उनको परमानेंटली रख लो, बट एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए उनको रखो, उनको विश्वास दिलाओ कि तुमको हम लोग इमीडिएटली नहीं निकालेंगे, उनको निकालेंगे ही नहीं, ऐसा उनको विश्वास देना चाहिए. So when they have that belief that I will be working for this organization for a longer period of time, they will work with application and dedication. There will be a sense of belonging among the employees that yes, this organization is my organization, and if I want to grow, I will work hard, I will work for the betterment of the organization. That's why the principle of stability of tenure should be properly implemented. That is, the management should assure the employees regarding job security. Okay. Moving to the next one is called as the principle of initiative. अब initiative का मतलब होता है खुद होके काम करना. जब आपको पता है कि ये काम आपका है, तो you take up the work and complete it. Don't wait for your superiors to tell you that please start your work. Take the initiative, grab the opportunity and complete the work. जब ऐसा होता है तो एम्प्लॉइज खुद होके काम करते हैं, उनके दिमाग में नए नए आइडियाज आएंगे, दे विल बी इनोवेटिव एंड दैट्स हाउ द ऑर्गेनाइजेशन विल प्रॉस्पर. सो न्यू आइडियाज फ्रॉम एम्प्लॉइज शुड बी वेलकम्ड बाय द मैनेजर्स. And then moving to the last one is called as the principle of esprit de corps. अब esprit de corps is in French. अब ये टर्म को ऐसा ही रखा गया so that the originality will be maintained. देखो, this particular principles were written in French language. Later on, it were translated in English. तो जो भी ट्रांसलेटर है उसने शायद एक प्रिंसिपल को ऐसा ही रखा, ओरिजिनलिटी मेंटेन करने के लिए. So principle of esprit de corps means teamwork. That means the entire team should work properly. In an organization, there are n number of departments. So if all these departments work with their full strength, work towards the betterment of the organization, then the organization will definitely prosper. याद है हम लोग बचपन में पढ़ते थे यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल. सो यूनिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एवरीवन शुड गिव देयर बेस्ट, एवरीवन शुड वर्क टुवर्ड्स वन पर्टिकुलर प्लान और द गोल. सो प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉप मींस टीम वर्क. That is, unity is strength. So, my dear students, these were the 14 different principles of Henry Fayal, and they were called as the administrative principles of management. We are now moving to the next concept, and this is called as scientific management. So, this scientific management concept was given by F.W. Taylor, that is, Frederick Winslow Taylor. Now, Frederick Winslow Taylor was an engineer and he used to work in Midvale Steel that was situated in Philadelphia. Now, all these principles of scientific management were developed by F.W. Taylor on the basis of science, and that's why he is also called as the father of scientific management. So, my dear students, after finishing off the principles of management, that is administrative management, which was given by Henry Fayal, now let's move on to the principles of scientific management. So, the first and the foremost principle of scientific management says science, not the rule of thumb. So before learning scientific management, we had seen that Henry Fayal had given different principles of administrative management. So people used to follow all these principles of management. But Frederick Winslow Taylor says, if you want to increase the organizational efficiency, then don't just follow the given rules blindly. He says that you analyze the situation. You think about the various options that could be implemented. Study the cost-benefit analysis of each and every option and then finalize one particular option. Make it as a standard and follow the same standard. That is called as follow the scientific principles and not just the rules that are already been designed. So, in order to increase the organizational efficiency, F.W. Taylor says that the rule of thumb method should be substituted
उसको ब्लाइंडली फॉलो करने का नहीं, बट रादर वी शुड डू अ साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ द वर्क. Okay, guys, moving to the next one is harmony and not discord. Now, harmony means better relationship, good relationship between the management and the employees. The management should understand under what circumstances the employees are working, and the employees should understand under what environment the management is taking decision. अगर दोनों management and employees एक दूसरे के problems को समझे तो they both will coordinate with each other, which would lead to better working of an organization. So Taylor says there should be a harmony between employees and the management. There should be a perfect understanding between both the parties, that is management and the employees. इससे जो working culture है, जो working environment है, that will be better. Okay, guys, let's move to the next one, and that is called as mental revolution. अब मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब होता है देयर नीड्स टू बी अ चेंज इन द एटीट्यूड. नॉर्मली मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि एम्प्लॉयज क्या वही तो काम करते हैं जो हम दे रहे हैं, और एम्प्लॉयज को लगता है कि मैनेजमेंट क्या आराम से बैठा रहता है और बस डिसीजन हवा में ले लेते हैं. सो ये एटीट्यूड को अपने को चेंज करने का है. Both should respect each other. Both should understand the working environment and culture in which they are working. So a positive attitude should be developed in the minds of employees towards the management, and vice versa. That means management should also have a positive attitude towards the employees. So this particular principle focuses on the change in the attitude of employees as well as the management. Okay, guys, moving to the next one is called as cooperation and not individualism. Now, here we stress on a concept that different employees should coordinate with other employees. One step ahead, different departments should coordinate with each other. And one more further step ahead, there should be a proper cooperation between the employees and the management. तो अगर हर aspect of ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करे, मतलब टॉप लेवल मिडिल लेवल के साथ, मिडिल लेवल लोअर लेवल के साथ, मैनेजमेंट वर्कर्स के साथ, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, एंड एट द स्मॉलेस्ट लेवल एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय के साथ अगर कोऑपरेट करे तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत आगे बढ़ सकता है, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकता है. सो दिस प्रिंसिपल एम्फसिस ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन द वर्कफोर्स. Okay, so let's move on to the next one, that is called as division of responsibility. Now, whatever is the responsibility of the organization, that should be properly divided between the managers and the employees. So proper division of work is nothing but division of responsibility. सो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में प्रॉपरली डिवाइड करना चाहिए. दैट मीन्स द प्लानिंग एस्पेक्ट ऑफ द वर्क, the planning aspect of responsibility should be done by the managers, and the implementation या execution of the plan, ये जो responsibility होता है that should be taken by the employees and also the lower level of management. Okay, so it is said that proper division of work should always be accompanied by division of responsibility. किनके बीच में? Managers and employees के बीच में. Major part of the responsibility should be done by the top level and the middle level. मतलब planning वगैरह का जो काम है that is done by the top level, and implementation का जो काम है that is done by lower level and the employees. And then the last principle is development of employer and employees for greater efficiency and maximum prosperity. Now, all the employees of the organization should be given proper training.
जो भी एम्प्लॉय सिलेक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन में उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देना चाहिए सो दैट हिज एफिशिएंसी कैन इंक्रीज। उसको राइट अपॉर्चुनिटीज देना चाहिए सो दैट वी कुड टेस्ट हिम कि सच में वो कितना एफिशिएंट है। And when the returns come out, these returns should be also shared with the employees. That's how all the type of people working in the organization can get maximum prosperity। और जब सब लोग खुश होते हैं तो they work with application and dedication और इसके वजह से organizational efficiency भी increase होगा। So, my dear students, these were the 6 points or rather 6 principles of scientific management. And my dear students, with this, I have also finished off with the very first chapter called as the principles of management.